good afternoon. This is Sandeep, and you're watching The Indian Weekender. This is our Coping with COVID-19 series. In this series, what we are doing, we are reaching out to our members of Kiwi Indian community. We are talking to workers, we are talking to small business owners, other business owners, and trying to understand how the second wave of COVID-19 in New Zealand has affected their lives. जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ऑकलैंड अभी अलर्ट लेवल 3 लॉकडाउन में जा चुका है और रेस्ट ऑफ न्यूजीलैंड इज इन अलर्ट लेवल 2 लॉकडाउन, जिससे हमारी सबकी लाइफ थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई है या बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है. So this has really created a lot of anxiety within our members of community, within our small businesses, our workers, who are not sure how long we are going to live with this COVID-19 virus. A lot of experts, they are emphasizing that it is advisable that our members of public very quickly adapt and innovate and accept that COVID-19 is going to stay here for quite some time. And they plan their businesses and their lifestyle and their work according to that. So to understand that and get to know how our businesses within our community are coping with this second wave of COVID-19, today we are reaching out to another business within our community. I'm going to speak to a business owner, Gurpreet Kandolla, who is popularly and famously known as Guru Kandolla. So welcome to our virtual studio. Guru, how are you today? I'm very well, Sandeep. Thank you to you, getting us here, and then to all our listeners who will be listening this series. And yes, so pretty much, yeah, just as you said, it's in COVID-19, things have changed. So we are pretty much change ourselves as well, the way we do the business. जैसे हम काम करते थे पहले, it's all been getting impacted, but I think people are getting now used to it. Definitely. And Guru, from what we know that you run multiple businesses, but I think we are focusing today on your business around finance, mortgage, and asset finance by the name of Logic Finance. So it would be interesting to understand how the first wave of coronavirus and the lockdown that we witnessed during March, April, how it affected you. The first wave, though, again, it was a big impact in terms of the way we used to do the business and the way we used to deal with the clients. So basically, it is unexpected. No one knew what to do. We have to change a lot of things, and in terms of the systems, because we couldn't meet any of those clients. We couldn't have those discussions. Like, we can have the discussions over the phone, but in terms of the clients, as you know, that I do the mortgages and I do the asset finance and the insurance. So basically, you have to meet client face to face. और COVID-19 के आने से उस पे एक restriction लग गई, so you can't meet the client face to face. And उसी में से ये virtual technology निकल के आई, जिसमें Zoom meetings हो रही हैं, WhatsApp chats हो रही हैं. So all those virtual chats has come into the place, but lot of systems has to be changed as well, कि जिसको हम इसको हम record कर सकते हैं. These discussions we can get recorded and stuff like that, so that future में अगर कुछ compliance issue होते हैं, then we can use these as a part of the discussion. So for us, yes, it was a change. But I think this change, the change was actually good, to be honest. Now, अभी देखो हम अगर यही मीटिंग हमें करनी होती तो मैं आपके साथ बैठ के कहीं ऑफिस में कर रहा होता. But अभी आप कहाँ कोसों दूर बैठे हो, मैं भी यहाँ पे दूर बैठा हूँ, and we still having this chat. And I think I really appreciate that's the spirit, Guru. ये हमारे community की, हमारे Kiwi Indian community की और हमारे businesses workers की spirit है कि हमें हर मुश्किल से एक रास्ता निकालना है, and I really appreciate this spirit, Guru. Now coming back to your main mortgage and finance industry, आप जब लॉकडाउन में गए होंगे अलर्ट लेवल 4 में, लास्ट टाइम मार्च अप्रैल में सब कुछ बंद हो गया था, फिर धीरे धीरे हम अलर्ट लेवल 3 में आए, फिर शायद आपने कुछ या आपके बिजनेस ने इनोवेट किया होगा, और जो ब्रॉडर जैसे जब इकोनॉमी हमारी खुलनी शुरू हुई होगी तो हाउसिंग मार्केट खुला होगा, लोगों ने जाके घर खरीदना देखना शुरू किया होगा, and then they would have needed services like yours.
तो उस समय के कुछ हमें एक्सपीरियंस बताएंगे आप हमें कि कैसा, हाउ हाउ एग्जैक्टली वाज योर क्लाइंट इंटरेक्शन? बिल्कुल। एक एक तो इतना मतलब एक एक ऐसा सिनेरियो है जिसको मैं काफी मेरे दिल के करीब है बेसिकली, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट फंस गया था। बेसिकली वी डन द लोन बिफोर द कोविड। तो हमने लोन कोविड से पहले कर दिया था, अप्रूवल कर दिया। जब अप्रूवल हो गया तो बेसिकली क्लाइंट ने कोविड शुरू होने से 2 दिन पहले प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट भी कर लिया था। सो देयर इज अ फाइनल इंस्पेक्शन। बट तो जो जो सेटलमेंट डेट था, इट फेल इट 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 फेल बिटवीन द कोविड थिंग। तो लॉकडाउन 4 में सेटलमेंट का डेट आ रहा था। नाउ ऐसी सिचुएशन हो गया कि बेसिकली client was saying that client was new to the bank tha. So the client was very new to the bank, and then they have to go and sign the documents to the bank to open the accounts and stuff like that for the anti money laundering and stuff like that. तो उस केस में बैंक उनको अलाउ नहीं कर रहा था आने के लिए, साइन करने के लिए, और जब तक अकाउंट नहीं खोलेंगे तब तक सेटलमेंट नहीं हो सकती थी। और वहां से जो वेंडर था जिसने घर बेच रहा था, ही वाज सो एडमेंट कि मुझे तो सेटलमेंट उसी दिन चाहिए, क्योंकि आप अपनी इंस्पेक्शन कर चुके हो, आपको चाबीज वर्चुअली मिल जाएंगी, आपके लेटर बॉक्स में हम चाबी छोड़ देंगे व्हाटएवर, लेकिन मुझे सेटलमेंट उसी दिन चाहिए। अगर उस दिन सेटलमेंट नहीं होगी तो आपका जो डिपॉजिट है इट्स गॉन। तो उन्होंने जो $60,000 डिपॉजिट डाला हुआ था, दैट्स गॉन इनटू द वेस्ट। अब हम ऐसी सिचुएशन में डल गए कि हमने पूरा जोर लगाया लॉयर टू लॉयर कि नहीं, इसको सेटलमेंट को थोड़ा पुश करें। तो बट दे सेइंग कि नहीं, ऐसा रूल्स में कुछ नहीं है कि इसको पुश करना है। तो बेसिकली अगर आपने इंस्पेक्शन कर लिया प्रॉपर्टी की, नाउ यू आर रेडी टू सेटल। और बैंक अकाउंट खोलने के लिए रेडी नहीं था बिकॉज दे वाज couldn't sign the forms। तो So that ऐसी was alert level 4 lockdown or alert level 3 lockdown? it was a level 4 lockdown। Okay, तो okay. हाँ, तो उसमें बेसिकली नो वन कैन मूव एंड इट वाज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो लेकिन विद द इस सिचुएशन में वी आई रियली रिक्वेस्टेड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द बैंक्स। I've gone to the higher management, requested, explained the scenario, and there was first time what they have done is that they've actually opened the account virtually. So उन्होंने भी account openly virtually account open किया just to make the settlement happen on the day, but the client couldn't do any transaction from their account. It was still locked, but it just only opened to do the settlement on the day. तो उस डे उसकी सेटलमेंट हुई, अकाउंट खुला, सेटलमेंट हुई, चाबी उसको मिल गई। एंड आफ्टर लॉकडाउन 4 इट मूव टू लॉकडाउन 3, तब वो जाके बैंक में जाके साइन करके आया, एंड बेसिकली देन देयर अकाउंट बिकम मोर ऑपरेशनल। सो ये ऐसी कई चीजों में जो काफी ये वाला जो केस था काफी डिफिकल्ट केस बन गया था, क्योंकि इसमें क्लाइंट के 60,000 was on the verge कि वो डूबने वाला था। नहीं, थैंक यू वेरी मच गुरु। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा किस्सा हम लोगों से शेयर किया, एंड दैट टेल्स द, आई वुड से, द स्पॉन्टेनिटी ऑफ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। आप एज ए बिजनेस ओनर, एज ए मॉर्गेज एंड फाइनेंस ब्रोकर, आपने अपना क्रिएटिविटी, इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी किया, एंड प्रोबब्ली यू आर आल्सो pushing the envelope and you reached out to higher management in the banks, and it is to credit of our main banks as well that they responded to your unprecedented request during an unprecedented time, and they also innovated and responded to the client's need. So I think in that respect, probably that was a very good outcome that you were able to receive, and it does tell to the mindset of our business community, both within the community, within the Kiwi Indian community, and also in the mainstream New Zealand, that they are ready to go extra mile to accommodate the challenges that are arising out of COVID-19 situation. So that's a very good sign. एंड चलिए, ये अलर्ट लेवल 4 की आपकी कुछ एक्सपीरियंसेस थे। उसके बाद जब हम अलर्ट लेवल 3 में गए और जैसे जैसे लाइफ हमारी नॉर्मल होती गई, जैसा कि मालूम है बीच में लगभग 100 दिन हमारे पास कोई भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के केस नहीं थे, तो उस दौरान व्हाट यू वर डूइंग एज अ बिजनेस ओनर? आप कॉम्प्लेसेंट हो गए थे बाकी न्यूजीलैंडर्स की तरह, या यू वर प्रिपेयरिंग एंड एंटिसिपेटिंग अ चेंज और मे बी अ शॉक in the form of a second wave coming soon? टू बी ऑनेस्ट आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, और मुझे मालूम था कि ये जो सेकंड वेव है वो आएगा। it was there in the air anyways, तो वो आना ही था। but I think we shouldn't be getting shocked. I think it should become like more like a norm now for all of us, and हमारे में वो क्षमता है जब हम इस challenges को basically
एक्सेप्ट करके वी कैन फाइंड द वेज. तो अब ये जो चीजें सीखने को मिल रही हैं, इट वाज नॉट देयर बिफोर, बट नाउ वी आर लर्निंग दिस एंड वी आर गेटिंग मास्टरी ऑफ इट एज वेल. तो और हमारी कम्युनिटी में, आई वुड से इन इंडियन कम्युनिटी और मे बी इन एनी अदर कम्युनिटी एज वेल, it's basically if you are a good person to accept the change and find out a way to make that change work, तो आपकी लाइफ में आपको कई चीजें सीखने को मिलती हैं. एंड आई थिंक दिस कोविड हैज ब्रॉट द एग्जैक्टली द सेम थिंग कि हमें नहीं पता नहीं पूरे वर्ल्ड को इसमें से क्या क्या सीखने को मिला है. और आई थिंक इट्स अ गुड लर्निंग. तो अभी जैसा मैंने आपसे इस केस सिनेरियो जो भी मैंने डिस्कस किया, तो ये चीज अगर कोविड नहीं होता तो ये तो कभी एक्सपीरियंस करने को भी नहीं मिलता था कि हम क्या किस लेवल तक इसको पुश कर सकते हैं और कैसे इसको निकाल सकते हैं. बट जब लॉकडाउन 4 से लेवल 3 पे और लेवल 3 से लेवल 2 पे और लेवल 2 से लेवल 1 पे बिजनेसेस जा रहे थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट कि मार्केट ड्रॉप होगा, होम लोन्स होने बंद हो जाएंगे और जो मार्केट है वो क्रैश हो जाएगी, प्रॉपर्टी के वैल्यूज नीचे गिर जाएंगे. बट जैसा जैसा इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे, इट्स अगेन पूरा ऑपोजिट हो रहा था. जैसा जैसा इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि ये सब ऐसे ऐसे नीचे होने वाला है, और ऐसे ही बिल्कुल उल्टा चल रहा था. तो बेसिकली अगेन दैट आल्सो टेल्स कि जितने भी मार्केट में रिव्यूज आते हैं, को बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बात करते हैं, यस दे टॉक अबाउट डाटा, उनके पास डाटा होता है और डाटा के ऊपर बेस पे बात करते हैं, व्हिच इज फाइन, एक्सेप्टेबल. लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि वो होगा ही होगा. वो किसी गुरुजी का मंत्र नहीं है कि वो होने ही वाला है, कि बोल दिया है कि होगा तो होगा वाला. तो बेसिकली उस केस में yes, the data was there to support, but the things has actually gone in a different way. It started to go up. Property market इतनी hot हो गई कि आज की डेट में जो प्रॉपर्टी बिकती नहीं थी वो भी बिक रही है, बिकॉज इतना शॉर्टेज हो गया है प्रॉपर्टी का मार्केट में कि जो प्रॉपर्टी पहले नहीं बिक रही थी, क्योंकि अगर आपके पास देखो सामने 10 चीजें पड़ी होंगी तो आप जौन सी आपको बेटर लगेगी वो आप उठाओगे. लेकिन अगर आपके पास चॉइस ही कम हो जाएगी, अब सिर्फ पड़ी 2 हुई हैं, तो आपके में से वो 2 में से एक ही उठानी पड़ेगी, और अगर एक ही पड़ी है तो आपको वही उठानी पड़ेगी. सो दैट्स हाउ इट बिकम द मार्केट. और उस केस में हम इतने बिजी हो गए कि बेसिकली हमारी जो एक तो जो पेंडिंग सेटलमेंट्स थी वो आ गई हमारे पास जो लेवल 3 लेवल 2 में, प्लस there's a new cases to start, जो new applications थी इनकी बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आने लग गई. फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंक्स ने they've changed the rule from the investment. जो पहले आपको 30% डिपॉजिट करना पड़ता था, अब बैंक से वास की 20% करना है, तो लोगों के घर में काफी इक्विटी उससे ऐड और बच गया. सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि मेरे पास एक घर है, लेट्स सी मैं अगर दूसरा घर भी ले सकता हूँ. तो ऐसे ऐसे करते करते एक्चुअली मार्केट का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्टअप हो गया. तो इस आज की डेट में अगर आप देखोगे, बैंक्स के पास इतनी एप्लीकेशन है कि जो पहले वो एप्लीकेशन 3 दिन में उठा लेते थे, अब वो 10 दिन में उठा रहे हैं. सो दैट मींस इतना बड़ा उनके पास भी बैकलॉग हो गया है. तो देखिए और वो गुरु, हमारे हाँ थ्रू ही गुरु जी, है. I will come back to you and here to you, but I would say that the commentary that you have given, probably a lot of politicians, especially those who are in opposition, might not like it. The reason being because, as you know that just coming back to what you have said, that a lot of experts, economic experts, they were expecting a downturn, economic downturn, and they were surprised by sudden consumer confidence and consumer spending, especially in the retail sector, just after we came out of those lockdown during March and April. And again, those economists, they have corrected themselves and they have given second round of explanation that this consumer confidence during that period of 100 odd days was probably inflated one and not real, and probably consumers and they were just trying to shop around and enjoy the experience still they can. Well, that's the explanation. But again, जैसा कि आपने बताया गुरुजी, आप जमीन से जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं जो जाके धंधा करते हैं मार्केट में. You are quite right when you say that those economic forecasts were not true, they really didn't turn out as they were saying. But again, what those experts are saying that an economic downturn might be coming soon, and it was being artificially holded by the government's continuous support that it was putting into the economy. But again, that is a work, that is something that needs to be seen in maybe next couple of months. We don't know what's going to happen, but I really appreciate your energy, your positive outlook, your enthusiasm to see the positivity out of that.
and I'm pretty sure that you are preparing well, as you have said, for any future shock that we might see after this second wave. So now coming back to what you have shared with us, अब आज की डेट में हम ऑकलैंड में बैठे हैं, हमारा लॉकडाउन 3 लग चुका है. How's your day-to-day work? Are you able to go out and meet clients and negotiate with them about mortgages or maybe about asset finances, or it is otherwise? It is otherwise. So basically, we're doing exactly what we're doing right now. जो अभी हम और आप बात कर रहे हैं, तो basically अब मेरे level 3 पे जाने से basically हमारा जो client के साथ face to face interaction है, that's totally stopped. So लेकिन हम अभी भी office में आ रहे हैं, we working through because we got a lot of work to finish. Applications are still coming through. Lockdown 3 maybe we still got the live deals coming through. People have put their offer on the table कि हमें ये loan चाहिए और उन्होंने application submit की हुई है, and everything is working as normal on our case. So basically the information is all coming through the emails, through the safe sources. उनको हम compile करके we are sending to the bank, and banks are still working at the same pace, and they are processing it, getting the approvals. So everything is working normal, but the way it's working is more like electronically. So either we having a face-to-face chat like this, or phone पे हमारा phone पे discussion होता है. कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे थे, जो वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट की, I'll come back to the point में कि इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि ये एक इन्फ्लेटेड है, जो होल्ड किया हुआ है. बट आई टेल यू कि जो मार्केट जो बूम हुआ है, वो उनसे नहीं बूम हुआ जिनको वेज सब्सिडी मिल रही थी, या people who are buying or getting the houses are in the market जो already essential services में हैं, तो उनका तो कभी वो पेमेंट रुका ही नहीं था. बेसिकली उनका जितना आता था उससे ज्यादा आने लग गया. So and banks are also giving the loan to only those people जिनको बैंक को कॉन्फिडेंस है कि ये वो वाली जॉब्स में काम कर रहे हैं जहां पे ये कभी रुकने वाले नहीं है. It will be either in the supermarkets, or either it will be in the essential services like middle hospitals or nurses or the doctors. या फिर ये quite जो right. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, and I agree with you that banks also are required and they should be doing the right thing of doing their risk assessment. And exactly. but the good thing out of this for the broader economy is that at least we were able to hold that downturn, that scary downturn, for quite some time. There was this boom that you were talking about. A lot of people who were at the right jobs, who were actually fortunate to be in the right jobs and still had didn't experience the redundancies that we have seen, and they have their source of income maintained. The good thing is that other things kept on going, like you were saying, your services, businesses like you, they have been prompt to help them. So that is a good sign for the economy, isn't it? Very good sign, very good sign. And I don't see that. Yeah, see, I'm not economist, but again, I'm with I'm doing the things which has been on the ground level. So what I see on the ground level is totally different, basically. So I don't see that property prices are going to go down. I don't see that people's going to stop buying the houses. I don't see the people's going to stop buying the assets. So when I talk about the asset, it's all about the trucks. I've just in this level 3, I've just processed 2 big loans of $500,000. So in total, like 2 big trucks, getting the contract from the main freight and the toll, So basically, वहाँ की demand बढ़ रही है. Basically, there's a lot of courier work is क्योंकि घर में बैठे हुए हैं हम, तो घर से ही shopping कर रहे हैं, घर पे ही सामान आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो that's coming from the essential services, like people like who are in these kind of businesses. तो इस business की growth बढ़ गई है. तो basically, there's a lot of people who are getting the now अब उन asset finance करने के लिए I'm not meeting them personally, but I'm having a chat to them, getting all the applications sorted, and that's done. और उनका truck loan है, उनका truck बन रहा है, they're getting into the business. So people are actually, some people have all, and I'm encouraging actually what I've seen in this new scenario is that people are started leaving their jobs and trying to become their own owner operators. तो जो खुद ही जो किसी के लिए ड्राइविंग कर रहे थे now, because उन्होंने कभी उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं कि 100% फंडिंग हो सकती है. So you can get a 100% फंडिंग. अगर आपका ट्रक है 100,000 का या 200,000 का, you can get a 200,000 fully funded, no deposit required, as long as आपको main freight या toll ने आपको contract दे दिया कि yeah, we are happy to give you this much work. Well, I'm pretty sure, Guru, I'm very confident that once we broadcast this show and everyone, all our customers, you are going to receive a lot of phone calls today. Because I think not only what you are suggesting is that there is a ray of hope out there. Things are not as gloomy as
what we might be thinking while sitting in our bedroom or on our couch. But yeah, that's really very good, Guru. I really appreciate that, sharing those kind of positivities outside there, and of course showing the way. It might be an opportunity for them to actually make a move from working for others to becoming an owner operator for themselves, which Exactly. is indeed a lifelong, I would say, for many of us, there's a lifelong dream. So I think in And that sense, I don't it's want to actually say that COVID-19 is a kind of a blessing for them, but yeah, it can still be blessing for some of them, isn't it? exactly. See, everyone can't win the race. And आज आज जो रेस जीत रहे हैं वो हो सकता है कल वाले टाइम पे रेस ना जीत रहे हैं, और वो जो आज हार रहे हैं वो कल वाले टाइम पे रेस जीतेंगे. सो इज ऑलवेज देयर इज अ इक्वल शेयर ऑफ. तो आज अगर आज हमारा हमारा दिन बढ़िया चल रहा है और किसी का दिन खराब चल रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा दिन आने वाला जिस दिन हमारा दिन खराब चलेगा और उनका दिन बढ़िया आएगा. सो चलिए, एवरीवन शुड. ये तो बड़ी अच्छी आपने फिलोसफिकल बात कर दी, लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन दोबारा आपके लॉजिक फाइनेंस बिजनेस के बारे में. आपने 100% एसेट फाइनेंस के बारे में बात किया, well, which is a, I think, a revelation to a lot of my viewers out there who would be watching this. So what kind of assets would you suggest that they can get it 100% finance? So basically, if they buying any, so basically, अभी मैं जैसे बोला कि courier business is on the boom. So basically, you can get in touch with any courier company and ask them कि I want to become an owner operator. तो and they've got so much job for you guys out there. तो वो आपको एक letter of intent देंगे जिसमें वो आपको एक promise करेंगे कि आप अगर हमारे पास आते हो तो then we will give you this much business definitely for the monthly, like maybe $10,000, $20,000. तो उस केस में अगर आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाता है, तो एसेट ऑफ फाइनेंस जो मैं बात कर रहा हूँ, इट विल बी 100% इज यू कैन बाय द ट्रक्स, द कोरियर वैन्स, यू कैन बाय द डिगर्स, यू कैन बाय अ बिग यूट्स इन टर्म्स ऑफ कि जिससे आप अपना बिजनेस चला सको. तो बेसिकली आपको जो ट्रक है उसमें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको ट्रक पूरा फंडिंग पे मिल जाएगा और यहाँ से आपका बिजनेस एक कंपनी आपको बोल रही है ट्रक लेके आओ और कंपनी ये दे रही है. तो बेसिकली दोनों चीजें जुड़ जाएंगी. वहां से आपको मेन फ्रेट ने या कुरियर कंपनी ने ऑफर दे दिया, यहाँ से हमने आपको ट्रक दिलवा दिया, यू गेट ऑन टू दैट, अपना जॉब शुरू किया एंड यू स्टार्ट रोलिंग दैट मनी. तो बेसिकली दैट्स हाउ इट वर्क्स. it's simple, it's not a rocket science, but again people has to have that courage. और किसी को अगर लगता है कि इसमें डिस्कशन करनी है, give more than happy to have a discussion with them. But बहुत हमारे वहां ऐसे लोग बैठे हुए जो ये जॉब जिनकी चली गई है और वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे. दिस इज द टाइम, अगर आपको लगता है कि यू लाइक दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन, गो एंड अप्रोच द फ्रेट कंपनीज. और अगर आपको वो पसंद करते हैं और आपको लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं, जस्ट अ सिंपल और लेटर की मैं आपको बोल रहा हूँ कि संदीप जी, यस आई एम हैप्पी विद यू कि आपने प्रीवियस में क्या एक्सपीरियंस है, आई एम हैप्पी टू गिव यू द लेटर ऑफ इंटेंट, यू ब्रिंग यू वैन और ट्रक एंड आई विल गिव यू दिस मच जॉब. तो अगर आपको वो मिलता है, and we will get you the funding as long as आपके credit सही है and there's no issue in your credit, and you will be your owner operator. तो आप अपना ट्रक चलाएं और अपना बिजनेस अपनी रोटी खुद कमाएं. Well, thank you very much, Guru. I think that is a very positive high point where I would like to finish this show. जो आपने ये पॉजिटिव एनर्जी पैदा करी है आज इस कन्वर्सेशन के दौरान, मैं चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो सिचुएशन में होंगे, जो शायद थोड़ा ग्लूमी फील कर रहे होंगे, वो शायद they will draw a lot of energy and maybe direction from what you have suggested today. So thank you very much for sharing your time today, sharing your valuable insight, and of course your positive energy. I'm pretty sure that our audiences, they would love to hear that, and they will prepare themselves a little bit more better how to cope with this COVID-19, which has come to stay with us at least for some time. So thanks once again for your time today. No worries. Thank you, Sandeep. And if anyone want to get in touch with me, it's the simple number is 0800 Logic Guru. तो अगर आप 0800 Logic Guru type करेंगे, वो सीधा comes to my mobile phone. It is actually 0800 564 424. So anyone who's keen to have a chat, I'm more than happy to help. Thank you very much, Guru, and all the best for rest of the lockdown 3 phase, whatever is left of it. Thank you. Thank you.